Assalamu alaikum students. This is part number 13th of question number 2 of exercise 8.1. Its 13th part is x minus 3y plus 1 is equals to 0. As I have told you that I'll send you solution. So I have drawn this table for you people. Your assignment is to note it down, okay? It's very simple, nothing difficult in this part. Just separate the variable y like this, and putting this values the values of x 2 minus 1 and 5 वो values मैंने put की हैं, so that I got a simple whole number. ठीक है, मैंने ये fraction ख़त्म कर दी है. यहाँ देखिए लोग, if I put x is equals to 2, it becomes 2 plus 1 by 3, 3 upon 3, and I got simple whole number. Again over here I put x is equals to minus 1. यहाँ पर मैंने minus 1 put किया. Minus 1 plus 1 0 by 3 and 0. Then I put x is equals to 5. 5 plus 1 by 3, y is equals to 2. आप कोई भी वैल्यू 1 और 2 भी 1 3 5 अदर देन दीज वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि आपका ये जो फ्रैक्शन है ये सॉल्व हो जाना चाहिए. अभी आप लोग डेसिमल को पॉइंट्स को प्लॉट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, सो कीप दैट थिंग इन माई माइंड. मैंने x की इस किस्म की वैल्यूज़ ली हैं कि आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ मेरे पास ये फ्रैक्शन रिजॉल्व हो जाए. ठीक है, आई विल बाय पुटिंग दीज वैल्यूज़ आई विल गेट सिंपल होल नंबर. ठीक है, अब ना हो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, व्हेन आई हैव x इज इक्वल टू 2, माई वैल्यू ऑफ y इज़ 1, सो दिस इज़ ऑर्डर पेयर 1 2 3, and now your target is to plot graph by taking these order pairs yourself. ठीक है, this is your again assignment for your part number 13th. Okay, now students, exercise number 8.2, page number 164. It's question number 1. I'm reading. Draw the conversion graph between liters and gallons using the relation 9 liters is equals to 2 gallons approximately, and taking liters along horizontal axis and gallons along vertical axis. From the graph, read number of gallons in 18 liters and number of liters in 8 gallons. ये जो टू पार्ट्स हैं हमने ग्राफ से रीड करने हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज़ to draw a graph. Now students, come to here its solution. In solution, obviously students, this is your given relation that 9 liters is equals to 2 gallons approximately, and we have to convert this relation in the form of equation. Okay, in the form of equation, that is x and y, because I need ordered pair to plot these ordered pairs on graph. ठीक है, अब हम ये करेंगे. In solution you will write liters and gallons. Then they have given you in question that taking liters along horizontal axis. तो liters को along horizontal axis लिखा, तो मैंने यहाँ x लिख लिया, and gallons along vertical axis, और ये gallons के लिए मैंने लिख लिया, right? Otherwise if this is not given, तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ y ले लें, यहाँ x ले लें, but this is given in your question that liters should be along x axis and gallons should be along y axis. So now come to this second, it's a condition that 9 liters is equals to 2 gallons. This is 9 liters and equals to 2 gallons. So by cross multiplication, 9y is equals to 2x and y is equals to 2x upon 9. This is your given equation. And again students, I have to take those values of x. After putting the value of x, I got simple whole value, whole number of this y. ठीक है, that is why I chose 0, 9 and 18. Now look, when I put x is equals to 0, see 2 into 0 upon 9, y is equals to 0. So my first ordered pair is 0 0. Then I chose x is equals to 9. यहाँ देखिए 9 cancel with 9 and y is equals to 2. So my ordered pair is 9 and 2. Then after 9 आप कुछ भी ले सकते थे, 27 भी ले सकते थे. ठीक है, बट मैंने यहाँ 18 लिया है. Why 18? Because look, यहाँ पर मेरे पास 18 is present, this number is present in my question. So that is why नेक्स्ट वैल्यू जो मैंने ली है ग्राफ की, वो मैंने ली है x is equals to 18 in equation number 1. ये मैंने पुट कर लिया. So the y is equals to 4. Now students, I have to plot
these ordered pairs on graph paper. ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ पेपर पे आपके लिए प्लॉट कर लिए हैं. यहाँ देखें स्केल मैंने क्या लिया है, along x axis 1 big square is equals to 9 liters. As they have given you in question that liters को आपने लेना है along x axis and gallons को आप लेंगे along y axis. तो यहाँ पर मैंने ओनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिया है, नेगेटिव की तरफ मैं नहीं गई, वो ज़रूरी नहीं है. ठीक है, हम 2 वैल्यू से भी प्लॉट कर सकते हैं, 3 वैल्यू से भी ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ सकती है. नाउ कम टू इट्स ऑर्डर्ड पेयर्स. क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स थे स्टूडेंट्स? देखिए पहला ऑर्डर पेयर था 0 0. सो ओ यस, मैं स्केल का बता रही थी, सॉरी. मैंने 1 बिग स्क्वायर 9 लीटर्स ले लिया. दिस इज़ 1 बिग स्क्वायर 9 लीटर, देन 18 27, ये लीटर्स के लिए ले लिया. एंड गैलन्स के लिए मैंने क्या लिया है, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 गैलन्स. 2 4 6 8 ये गैलन्स के लिए आ गया. नाउ ड्रॉ दिस ग्राफ. फर्स्ट पॉइंट था 0 0, ये आ गया ओरिजिन. सेकेंड था 9,2, देखिए एक्स एक्सिस पे 9 एंड वाई एक्सिस पे 2. देन थर्ड पॉइंट था 18 एंड 4. By joining these dots I got this straight line, and the name of this straight line is y is equals to I have written over here wrong. ये होगा हमारे पास y is equals 9y is equals to 9y is equals to 2x. ओके, ये मैंने रॉन्ग लिख दिया था, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन 2 की लिख दी थी. सो द नेम ऑफ दिस ग्राफ, दिस इक्वेशन इज़ 9y is equals to 2x. यस, यही नेम है. नाउ स्टूडेंट्स कम टू इट्स फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या कहा है बुक में, देखिए हम बुक भी सामने रखते हैं और साथ साथ ग्राफ पेपर भी रखते हैं. स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट इन्होंने कहा हुआ है द नंबर ऑफ़ गैलन्स इन 18 लीटर्स. ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स ने ग्राफ से रीड करना है. देखिए 18 लीटर्स कहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 18 लीटर्स है. ठीक है, 18 लीटर्स आपने देखना है, मूव करना है अपवर्ड टूवर्ड्स द ग्राफ, और जहाँ पर ये ग्राफ को टच कर देते हैं, जिस स्ट्रेट लाइन को ये टच कर रही है, ठीक है, वहाँ से आपने मूव करना है. व्हेन इट टचेस दिस स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ से आपने स्ट्रेट मूव करना है टूवर्ड्स वाई एक्सिस, दैट इज़ टूवर्ड्स गैलन्स मूव करना है. तो क्या इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 4. सो 18 लीटर्स में हाउ मेनी नंबर ऑफ़ गैलन्स आर प्रेजेंट, 4 गैलन्स आर प्रेजेंट. सो आप आंसर किस तरह से लिखेंगे, आप इसको फिर ऐसे आंसर की फॉर्म में लिख देंगे ऑन योर दिस साइड. ये मैंने लिखा हुआ है आप स्टूडेंट्स के लिए. ये देखिए फ्रॉम द ग्राफ नंबर ऑफ़ गैलन्स इन 18 लीटर्स, मैंने ग्राफ से रीड किया है, कितना है 4 गैलन्स है. ओके राइट. नाउ सेकेंड पार्ट है, वो भी ग्राफ से रीड करना है. द नंबर ऑफ़ लीटर्स इन 8 गैलन्स. 8 गैलन्स में आप देखिए नंबर ऑफ़ लीटर्स कितना आ रहा है. ठीक है, अगेन गो बैक टू योर ग्राफ पेपर. ग्राफ पे जाते हैं स्टूडेंट्स. क्या था हमारा क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ लीटर्स इन 8, नंबर ऑफ़ लीटर्स फाइंड आउट करना है 8 गैलन्स में. तो गैलन्स की तरफ जाएं, ये देखें ये 8 गैलन्स आ रहा है, आपने नंबर ऑफ़ लीटर्स फाइंड आउट करना है. तो मूव करें, स्ट्रेट मूव करें, सो दैट व्हेन यू टच योर स्ट्रेट लाइन, और फिर आपने वहाँ से डाउनवर्ड जाना है टूवर्ड्स लीटर्स और टूवर्ड्स एक्स एक्सिस. सो 36 मीन्स 8 गैलन्स में कितने लीटर्स आते हैं, 36 लीटर्स. तो ये आप लिख देंगे अपने इसी सोल्यूशन पे, दैट नंबर ऑफ़ लीटर्स इन 8 गैलन्स इज इक्वल्स टू 36 लीटर्स. ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. आई होप आपको ग्राफ से रीड करना आ गया होगा. नाउ इट्स सेकेंड क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. On 15/3, 2008, the exchange rate of Pakistani currency and Saudi riyal was as under. 1 Saudi riyal is equals to 16.70 rupees. If Pakistani currency Y is an expression of Saudi riyal X expressed under the rule Y is equals to 16.70x, then draw the conversion graph between these two currencies by taking Saudi riyal along x-axis. Students, they have already first given a relation that 1 Saudi riyal
on 15/3/2008 it is equals to 16.70 rupees. Then they expressed this in the form of x and y. In this expression x और y की फॉर्म में इक्वेशन बनाई है that y is equals to 16.70x. और हम खुद भी बना सकते हैं इफ़ दे हैव नॉट गिवन दिस रिलेशन. तो स्टूडेंट्स आप खुद भी देख लें. देखिए सऊदी रियाल एंड रुपीज़ इन दोनों के बिटवीन रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट करनी है. सो राइट डाउन Saudi Riyal and rupees. Then what is relation? That 1 Saudi Riyal is equals to 16.70 rupees. वही काम किया. And यहाँ पे भी you people are bound that they have told you in question that Saudi Riyal along x-axis. Saudi Riyal जो है आपने along x-axis लेना है, rupees फिर obviously y-axis. By cross multiplication y is equals to this. अब students for this 16.70 हमने प्लॉट करना होगा ग्राफ में, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. सो आई एम टेकिंग ओनली दीज 2 पॉइंट्स. फर्स्ट आई एम टेकिंग x इज़ इक्वल्स टू 0 एंड देन x इज़ इक्वल्स टू 1 सो दैट ग्राफ प्लॉट करना हमारे लिए ईजी हो. ठीक है. तो व्हेन आई पुट x इज़ इक्वल्स टू 0 y 0 आ गया एंड x इज़ इक्वल्स टू 1. सो दिस इज़ टेबल फॉर y इज़ इक्वल्स टू 16.70 x से बना लिया. नाउ आई हैव टू प्लॉट दीज 2 पॉइंट्स. अगेन स्टूडेंट्स look this is usually such type of graphs usually हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं. ठीक है. तो हम ये क्या है सऊदी रियाल अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया, रुपीज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस. मैंने वन बिग स्क्वायर 1 सऊदी रियाल ले लिया राइट एंड वन बिग स्क्वायर अलॉन्ग वाई एक्सिस 16.70 रुपीज़ ले लिया. Then my first point is 0 0. This is origin obviously and second point is 1 x along सऊदी रियाल along x axis 1 है एंड वर्टिकल वैल्यू y क्या आ रही है 16.70. सो ये इसकी वैल्यू है. सो बाय जॉइनिंग दीज 2 डॉट्स आई गेट दिस स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अब ये हमारे ओनली जस्ट आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. ठीक है. एटलीस्ट यू नीड 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो मुझे 2 पॉइंट्स अगर मैं आगे लेती हूँ तो 16.70 33.4 इसके डिफरेंट वैल्यूज़ को लेना यहाँ प्लॉट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. दैट इज़ वाई in this part in this question I am taking only 2 very simple easy values that 1 and 0. और हम ग्राफ की जो लेबलिंग भी है वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं. ठीक है. हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो. राइट स्टूडेंट्स. आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा. Okay, now students question number 4th I'm not doing it's question number 3rd. You have already done question number 3rd before vacations. Question number 4th is draw the graph of following relations. They have given you a relation 1 mile is equals to 1.6 kilometer. Okay, first you will make a linear equation corresponding to this given relation. Okay. How you will write or find linear equation? The procedure is you will write mile and kilometer because this is relation between mile and kilometer. Then students they have given you that 1 mile is equals to 1.6 kilometer. So 1 mile is equals to 1.6 kilometer and here students and now it's up to you that you can write over here x and over here y और यहाँ y लिख लें यहाँ x. But I am giving you a tip that always write opposite of this one y. ठीक है. आपने 1 के ऑपोजिट हमेशा यहाँ y लिखना है और obviously this becomes x so that when you convert it in equation it becomes by cross multiplication y is equals to 1.6 x. Okay. यहाँ पर simple value of y आ गई which is free from any coefficient. Right. यहाँ linear coefficient आ रहा है. You can easily find out the values. Now first I am taking very simple values 0 and 1. Students at least 2 points are required to draw a graph of any straight line. ठीक है. तो बस बहुत ज़्यादा complex हम नहीं होते. हम जो है बहुत complications में नहीं जाते. हम simple छोटी simple values ले लेते हैं. 0 मैंने ले ली. When I put x is equals to 0 in this it becomes y is equals to 1.6 into 0 0 and when I put x is equals to 1 so
table for this is this one, ठीक है, 0 0 पे 0. Now the time of drawing its graph, students, I have taken along x-axis 1 big square is equals to 1 mile, and along y-axis 1 big square is equals to 1.6 किलोमीटर. अब देखिए ग्राफ के लिए सिंपल से टिप दे देती हूँ. along x-axis you have seen there are two values 0 and 1. So I gave scale that 1 big square is equals to 1 unit. Highest value is 1. And along y-axis देखिए vertical axis पे 0 है and then 1.6 है. So I have started my scale from 1.6. first square should be of length 1.6, ठीक है. तो यहाँ से देखिए आपने स्केल दे देना है. That is why I have given you this scale that along x-axis पे क्या था, miles था, and y-axis पे I have kilometer, ठीक है. कैसे, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है along x-axis mile है और along y-axis kilometer है. So miles and kilometer. And students usually on your book they define conversion graph in first quadrant, ठीक है. सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग इन्होंने डिफाइन किया हुआ है. सो ये देखिए 1 बिग स्क्वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपके पास क्या आ गया 1 माइल, एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यूज चाहिए थी. दिस इज़ ज़ीरो ऑरिजिन, और ये मैंने एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड वाई मैंने शो कर दिया. Now plot my first point. This is 0 0, obviously it's here. Sorry. Then students, next is x is equals to 1 and y is equals to 1.6. तो ये देखिए 1 and 1.6. So I have 2 points. One point is over here, one point is over here. Join these two dots and draw straight line, and name this straight line as y is equals to 1.6 x. Okay, so and name these ordered pairs as 0 and a. So this is conversion graph of your first part of question number 4, that is 1 mile is equals to 1.6 kilometer. Now come to its second part is again they have given you that 1 acre is equals to 0.4 hectare. तो देखिए एकड़ एंड हेक्टर में मैंने रिलेशनशिप ले ली. 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 0.4, एंड मैंने जो आपको हिंट दी थे कि 1 के ऑपोजिट आप y ले लें, सो दैट y इज इक्वल्स टू 0.4x. नाउ स्टूडेंट्स सिंपल सी वैल्यू ले लें 0 एंड 1. दिस इज 0 1 वैल्यूज पुट की, आपके पास ये y की वैल्यूज एंड ऑर्डर्ड पेयर आ गया. come for its scale देखिए along x axis your highest value is 1 and along y axis your highest value is 0.4. तो हम यहाँ से स्केल एडजस्ट करते हैं इन वैल्यूज़ को देख के, ठीक है. तो मैंने स्केल यही लिखा है along x axis 1 big square is equals to 1 acre. ये देखिए ये मेरे पास एकड़ along x axis है, यहाँ आप देख सकते हैं acre along x axis and hectare along y axis. तो वही है acre along x axis, hectare along y axis. 1 big square along x axis is 1 acre and along y axis 1 big square is equals to 0.4 hectare. तो ये मैंने ले लिया, पॉइंट्स को प्लॉट किए, 2 पॉइंट्स प्लॉट किए, डॉट ज्वाइन किया एंड गिव द नेम टू दिस स्ट्रेट लाइन दैट y is equals to 0.4x. So this is its second part. Okay, now students it's third part. F is equals to 9 upon 5 c plus 32. Students, I'm not making its linear equation according to this given expression, because you have seen this 32 is already present. What is F? It's Fahrenheit and C is Celsius. Students, I'm again taking very simple values, that is the value of C I'm taking here 0. तो ये मेरे पास 32 वैल्यू आ जाती है आफ्टर पुटिंग दिस 0 इन दिस इक्वेशन नंबर 1. Fahrenheit value corresponding to this C is 32. Then second C is equals to 5. Why I have taken this C5? Because 5 cancel with this 5 and I got a simple whole value of this Fahrenheit. Okay, then table. This is table ordered pair 0 and आप C and F ही लिखेंगे because x y में हमने नहीं लिखा.
541 and 541. This is these two are ordered pairs. Now students, what I have told you that you will adjust a scale according to these values. Now look, this is centigrade is or Celsius is always along x-axis. तो x-axis पे highest value आपके पास 5 आ रही है, and along y-axis your value is 32 to 41. So here you will adjust scale like along x-axis 1 big square is equals to 1 degree Celsius. तो ये देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पर, this is centigrade along x-axis, Fahrenheit along y-axis, और इसी तरह से मैंने इनको नेम्स क्या दे दिए है, this is C prime, F prime and F. Now come to its first ordered pair. First ordered pair क्या था मेरे पास स्टूडेंट्स, 0 and 32. तो ये देखिए मेरे पास फर्स्ट ज़ीरो इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 बिग स्क्वायर को मैंने 10 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लिया. तो 0 and 32 स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए मूव करें आप, तो दिस इज़ 30th आपके पास वैल्यू आ रही है. देन स्टूडेंट्स दिस इज़, look, this is 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40. तो ये हमारे पास 1 यूनिट इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ देखें, सो सेकेंड स्मॉल स्क्वायर शोज 32 वैल्यू. सो 0, 0 and 32, this is my first ordered pair, and second ordered pair is 5 and 41. Look, this is 5 and 41. तो ये देखिए ये corresponding to 40, this is 41, and above first small square is your 41 value. ठीक है, ये represent कर रहा है 41. So by plotting these 2 points students, I draw the graph of this relationship between Fahrenheit and Celsius scale. Okay, I hope ये भी clear हो गया होगा आपको. Now last part of your this question number 4th, its relationship between 1 rupee and 1 upon 86. 1 rupee is equals to 1 upon $86. Relationship between rupee and dollar. Again you will make a linear equation corresponding to this relation. You know 1 rupee is equals to 1 upon $86, and opposite to 1 you will write y, so it becomes x. By cross multiplication y is equals to 1 upon 86x. Again students छोटी सी value ले लें x 0, when I take the value of x is equals to 0, so y is equals to 0. This is my first ordered pair, and again x is equals to 43. 43 स्टूडेंट्स क्यों लिया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ 0.5 वैल्यू आ रही थी. आई कैन वेरी इजीली प्लॉट दिस वैल्यू, अदरवाइज यू कैन टेक एनी अदर वैल्यू, उसको फिर राउंड ऑफ करके आप बना सकते हैं. ठीक है, 43 एंड 0.5. नाउ कम टू इट्स ग्राफ. along x axis my highest value is 43 and along y axis 0.5. तो मैंने इस तरह से इसका स्केल एडजस्ट किया है. Along x-axis 1 big square is equals to 43 rupee. So along x-axis, this is x-axis, rupees ले लिया, x prime, y, and as I have told you that conversion graphs usually first quadrant में draw करते हैं. ठीक है, along positive x-axis and y, and dollar को मैंने ले लिया, 1 big square is equals to $10. Now first value is 43, this is 43, and y क्या आ रहा था corresponding to second ordered pair में. First ordered pair 0 था, second is 43 and 0.5. So this is 43 and 0.5 count करें, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5. So this is my second ordered pair. Join these two dots and draw a straight line and give name to this straight line as y is equals to 1 upon 86x. Okay, so यहाँ पे भी लिख लिया करें. This is question number fourth part of question number 4, यहाँ भी mention किया करें. So students, this is last part of your question number 4. With this your exercise 8.2 is completed. I'm also sending you images of all these question number 1, 2 and this question number 4. ठीक है, आप वीडियो से भी समझ लें, और कोई प्रॉब्लम होती है तो उन इमेजेस को भी आप देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. Close till I get up. Time is barely on our side.
waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. To see the horizon turn us to thousands.